नमस्कार पिलामाने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को स्वागत। आज मैराथन रहइबो कंप्यूटर आउ इंटरनेट अवेयरनेस उपरे। एई मैराथन नो एटा तृतीय भाग। तो प्रथम दुई भाग मु ऑलरेडी अपलोड कर देछि, प्ले लिस्ट जाके देखि देबे। आउ सबुर पीडीएफ पई मो इंस्टाग्राम चैनल को सॉरी टेलीग्राम चैनल को फॉलो करंतु, लिंक डिस्क्रिप्शन अछि। तो बिना देरी न करी कि हमें जल्दी जल्दी डिस्कशन करिवा, काहेकि ना 65 क्वेश्चन अछि ऑलरेडी। ओनली इम्पोर्टेड को एमसीक्यू जोगुड़ा को क्वेश्चन पूर्ववर्ती क्वेश्चन परीक्षा जोगुड़ा को आसी सारी से क्वेश्चन गुड़ा को मुझे डिस्कशन करी। तेणुकु करिकी वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करंतु और लास्ट पर्यंत मो सहित जोड़ी रहंतु। 65 क्वेश्चन को पढ़िवा पुणी ताकू आउ थरे रिवाइज भी मध्य करिवा एई वीडियो माध्यम। तो चलंतु आरंभ करिवा। The collecting personal information and effectively posing as another individual is known as the crime of A. Spooling, B. Identify theft या फिर C. Spoofing या फिर D. Hacking। तो यार उत्तर हमरा B है जो identity theft। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, malicious software is known as badware, malware, maliciousware या फिर illegal ware। तो यार उत्तर है जो B. malware। परवर्ती क्वेश्चन, a program that performs a useful task when simultaneously allowing destructive act is। तो यार उत्तर है जो कौन देखिवा, a worm, B. trojan horse या फिर C. virus या फिर D. माइक्रो वायरस। ये है जो उत्तर B है जो ट्रोजन वायरस। परवर्ती क्वेश्चन देखिवा कौन, व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूजेस कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। से निजे को निजे आउसे रिप्रोड्यूस कर देबो, सेटा कोन वायरस, ए टाइम बम, बी वर्म, सी मेलिसा वायरस या फिर डी माइक्रो वायरस। तो यार उत्तर आमर है जो वर्म वायरस, जे कि से ताकू निजे को रिप्लिकेट कर चलिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा, ए लॉजिक बम दैट वाज क्रिएटेड टू erupt एंड Michelangelo birthdays is an example of। तो Michelangelo की बर्थडे को कोन एग्जांपल ले नै के करा जाय छी, लॉजिक पर सेही तांकरी बर्थडे को नै गुटे लॉजिक बम तैयारी कर, तार नाम कोन देखिवा, ए टाइम रिलेटेड बम सीक्वेंस, ए बी वायरस, सी टाइम बम या फिर डी ट्रोजन वायरस। तार उत्तर है जो टाइम बम। परवर्ती क्वेश्चन देखिवा, डैश इज द measurement of things such as fingerprints and retinal scan used for security assess, a biometrics, B biomeasurement या फिर C computer security या फिर D smart weapon machinery। तो या उत्तर कौन है जो बायोमेट्रिक्स, जोटे कि हम आधार केंद्र रे बायोमेट्रिक करिया जाऊ ना सेटा। तो रेटिनल स्कैन आखिर स्कैन करे, आंगुली रहउची फिंगरप्रिंट्स में, तो दैट इज द कॉल्ड बायोमेट्रिक्स। परवर्ती क्वेश्चन देखिवा, हार्डवेयर एंड software designed to guard against unauthorized access to computer network is known as a hacker proof program, B firewall, C hacker resistant server या फिर D encryption safe wall। तो यार उत्तर firewall है जो B। परवर्ती क्वेश्चन, the scrambling of code is known as A encryption, B a firewall या फिर C scrambling या फिर D password proofing। तो या उत्तर है जो encryption, scrambling of code को encryption कहा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नोबॉल इज एन और ए। तो स्नोबॉल टा कौन देखिवा, ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी HLL, सी सॉफ्टवेयर या फिर डी सर्च इंजिन। तो यार उत्तर बी है जो HLL हाई लेवल लैंग्वेज। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो, याको मन रखिथिबे। परवर्ती क्वेश्चन देखिवा, स्विचिंग डिवाइस ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर इज ए वैक्यूम ट्यूब, बी ट्रांजिस्टर, सी IC या फिर डी VLSI। तो यार उत्तर है जो VLSI। तो परवर्ती क्वेश्चन देखिए, डैश कंप्यूटर इज ए स्मॉल जनरल पर्पस कंप्यूटर बट लार्जर देन पोर्टेबल कंप्यूटर। तो ए हाइब्रिड, बी डिजिटल, सी डेस्कटॉप या फिर डी लैपटॉप। तो यार उत्तर कौन है जो 11 डी उत्तर है जो लैपटॉप इज ए कंप्यूटर स्मॉल जनरल पर्पस बट लार्जर देन पोर्टेबल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश कंप्यूटर operates essentially by counting, a portable computer, a hybrid computer या फिर C एनालॉग कंप्यूटर या फिर D डिजिटल कंप्यूटर। तो यार उत्तर है जो डिजिटल कंप्यूटर, जो कि ऑपरेट करे एसेंशियली फॉर काउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैथोड रे ट्यूब इज ए फॉर्म ऑफ ए कीबोर्ड, बी माउस, सी मॉनिटर या फिर डी मदरबोर्ड। ये कैथोड रे ट्यूब कौन कहते, CRT, तार फुल फॉर्म लिखि दिए कैथोड रे ट्यूब, एटा गोटे मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, notebook, laptop, palm, handheld computers are coming under the category of desk computer। तो ये सब कंप्यूटर कौन कैटेगरी आसे, ए डिजिटल कंप्यूटर, बी मेनफ्रेम कंप्यूटर,
सी पोर्टेबल कंप्यूटर या फिर डी हाइब्रिड कंप्यूटर। यार उत्तर पोर्टेबल कंप्यूटर जोटा कि हम पोर्ट करि परबा एठु सेठे कि नै परिबा जोटी परिबा कार कोठी पिकनिक जाउछन कोठी ट्रैवल करछन ताको नै कि यूज करि परबा दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा desk printer is the cheapest in the terms of price and operating cost। A inkjet, B laser, C thermal या फिर D dot matrix printer। तो dot matrix printer जोटा कि cheapest terms of price and operating cost। next question देखिबा desks are used for plotting graphs and design on papers। तो कहा को यूज करी के ग्राफ रे प्लॉटिंग करू बा पेपर को डिजाइन करबा पई व्यवहार करू। ए ट्रैक बॉल, बी जॉयस्टिक, सी लाइट पेन या फिर डी प्लॉटर्स। तो यार उत्तर है जो हमारा प्लॉटर्स प्लॉटिंग करियो दैट इज द प्लॉटर्स प्लॉटर को यूज करी हम प्लॉटिंग ग्राफ और डिजाइन पेपर करू। नेक्स्ट क्वेश्चन डेस्क आर हाई एंड प्रिंटर्स। तो कोनटा उटा हाई एंड प्रिंटर्स? ए इंकजेट, बी लेजर, सी थर्मल या फिर डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर्स इज द हाई एंड प्रिंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जोशी परफ्यूम्स आर एग्जांपल्स ऑफ कोन? देखिबा जोशी और परफ्यूम एबा सब कहार एग्जांपल? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी कंप्यूटर लैंग्वेज, सी कंप्यूटर वायरसेस या फिर डी वेब पोर्टल्स। यार उत्तर कंप्यूटर वायरसेस। तो जोशी परफ्यूम्स परफ्यूम जब हमें परफ्यूम यूज करू सेडा कोन है सेडा होची कंप्यूटर वायरसेस रे जीवो। तो यार को मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मैन स्टैंड्स फॉर। तो ए मैक्सिमम एरिया नेटवर्क, मिनिमम एरिया नेटवर्क, मैन एरिया नेटवर्क या फिर डी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दैट इज द आंसर डी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एन स्टैंड्स फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी एमान को इधर कोनटा देखिबा ए लैन, बी वन या फिर सी मैन या फिर डी बस। अगर मैंने सुनी थी बस टोपोलॉजी कोनती तो डी इज द बस इजिवो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क। ए एमान को इधर कोनटा उटे टाइप ऑफ नेटवर्क है देखिबा ए रिंग, बी बस, सी स्टार या फिर डी पैन। तो यार उत्तर कोन हेजिवो? यार उत्तर हेजिवो डी पैन। पैन इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा VoIP स्टैंड्स फॉर। तो VoIP स्टैंड्स फॉर क्या होना देखिबा ए वॉइस ओवर आईपी, बी वीडियो ओवर आईपी या फिर सी वायरसेस ओवर आईपी या फिर डी वर्चुअल ओवर आईपी। तो यार उत्तर है जो वॉइस ओवर आईपी दैट इज VoIP। नेक्स्ट क्वेश्चन आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज ए मोजाइक, बी नेटस्केप या फिर सी इंटरनेट एक्सप्लोर या फिर डी कोलाब्रा। तो यार उत्तर है जो मोजाइक इज द फर्स्ट इंटरनेट ब्राउजर वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डेस आर set of rules and procedures to control the data transmission over the internet। A IP address, B domains या फिर C protocol या फिर D gateway। तो यार उत्तर है जो C protocol। protocol sets a rules and procedure to control the data transmission over the internet। next question NOS stands for। तो NOS full form कौन देखिबा node operating system, non open software, network operating system, non operating software। that is the answer the C network operating system that is answer। next question these are system software to facilitate editing of text and data। MS Word, B editor, C PowerPoint या फिर D MS publisher। तो या उत्तर कौन है जो editor। editor हमें यूज करू text for editing for text and data। next question in world today most of the computers are। तो वर्तमान जो वर्ल्ड रे कंप्यूटर गुडा केमती का ए डिजिटल, बी हाइब्रिड या फिर सी एनालॉग या फिर डी कॉम्प्लेक्स। तो वर्तमान जो कंप्यूटर गुडा हम यूज करछे डिजिटल कंप्यूटर दैट इज द ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा रिप्रेजेंटेड एज ए डिस्क्रीट सिग्नल। तो एनालॉग कंप्यूटर में होची कि डिजिटल कंप्यूटर या फिर बोथ या फिर डी हाइब्रिड कंप्यूटर। तो या उत्तर हमर है जो डिजिटल कंप्यूटर रे डिस्क्रीट डाटा सिग्नल से होची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which of the following is available in the form of a PC now। a mainframe, B microcomputer, C mini computer या फिर D both B and C। तो यार उत्तर कौन है जीवो B है जो only microcomputer available in the form of PC now। next question Param is an example of supercomputer, a PC या फिर C लैपटॉप या फिर PDA। तो Param is a supercomputer और या को कोठ रखा है पुणे रे रखा है मन रखिथिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन the primary function of the desk is just to set up the hardware and load and start an operating system, a system program, BIOS या फिर CPU या फिर memory। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने इंस्टॉल करू सेतले से कोन करना लोड करे हार्डवेयर को लोड करिवो एवं स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज द पॉइंट ऑफ बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज BIOS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द
Days is the amount of data that a storage device can move from the storage medium to the computer per second. ताको कौन कहा जाए देखिए ए डाटा माइग्रेशन रेट, बी डाटा डिजिटाइजेशन रेट, या फिर सी डाटा ट्रांसफर रेट, या फिर डी डाटा एक्सेस रेट. तो यार उत्तर कौन है जीवो? यार उत्तर है जीवो डाटा ट्रांसफर रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, a device which is not connected to CPU is called a landline device, B online device, या फिर C offline device, या फिर D devices. ना यार आंसर है C offline devices. Which is the other name for the program chip? A RAM, B ROM, या फिर C LSIC, या फिर D PROM PROM. तो यार आंसर LSIC है जो that is the program chip. Next question देखिए, online real system, online real-time system become popular in dash generation. A first generation, B second generation, C third generation, या फिर D fourth generation. तो यार उत्तर है जो third generation C. Next question, this is the ability of a device to jump directly to the requested data. A sequential access, random access, quick access, या फिर all of the above. तो यार उत्तर है जो B random access. Next question, the task of performing operation like arithmetic and logical operation is called a processing, storing, editing, या sorting. तो यार उत्तर है जो a processing. Next question, which one of the following is not a computer language? MS Excel, Basic, COBOL, or C++. So MS Excel is not a computer language. Next question, the 39, dash store data or information temporarily and pass it on is directed by the control unit. A address, B register, C number, या फिर D memory. तो यार उत्तर कौन है जो B register. Next question, dash is an additional set of commands that the computer displays after you make a selection from the main menu. A dialog box, a sub menu, या C menu selection, या फिर D all of the above. तो यार उत्तर है जो a dialog box. Next question, dash is a maybe its concern is repeated. So next question, COBOL is an acronym for a common basic oriented language, a common computer business oriented language, या फिर common business operated language, या फिर common business organized language. That is the answer of a common business oriented language, that is COBOL. It is a high level language. Next question, which of the following is not one of the four major data processing functions of a computer? Gathering data, processing data into information, analyzing the data or information, storing the data or information. तो एमान को इधर कोउंटा नुहे देखिवा एटा होची एनालाइज करे नाही डाटा को. तो C is the answer. The CPU and memory are located on the expansion board, motherboard, storage device and output devices. तो यार उत्तर है जिवो motherboard रे CPU and memory होची सेठी रहता है located. Next question, this is the science that attempts to produce machines that display the same type of intelligence that humans do. So nanoscience, nanotechnology, simulation, या फिर artificial intelligence. Artificial intelligence, this question will be most important because today we are using everything in AI based. Artificial intelligence based सब जिन को आम यूज करते तेणु AI रो क्वेश्चन गुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट रहिबो सेटा मन रखिथिबे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, servers are computer that provide resources to all the computers connected to a network. mainframe, supercomputer, या फिर D client. तो या उत्तर है जो B mainframe computer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a computer program that converts an entire program into machine language at one time is called A or N. तो या को कौन कौन थे? A interpreter, B simulator, C character, या फिर D compiler. तो यार उत्तर है जो C characters. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन अछि, the difference between people with access to computer and the internet and those without the access known as the digital divide, internet divide, web divide, या फिर illiteracy. तो यार उत्तर है जो digital divide is the answer. Next question, computer manipulates data in many ways and this manipulation is called upgrading, processing, fetching, या फिर utilizing. तो याकर आंसर है जो कौन processing. तो कंप्यूटर को बहुत भाव में तार डाटा को मैनिपुलेट करे जाए, से मैनिपुलेशन को कौन कहा जाए? प्रोसेसिंग कहा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू recover and read deleted or damaged files from a criminal computer is an example of law enforcement specialty called robotics, simulation, computer forensics, या फिर D
animation, that is the answer of computer forensic को आ जाएगा. Next question, dash are used to identify a user who return to a website. A cookies, B plugins या फिर C scripts या फिर D ASPS. तो यार उत्तर है जो A cookies. Next question, codes consisting of lines of varying width or length that are computer readable are known as A NSCII code या फिर A magnetic tape या फिर C एन ओसीएस स्कैनर या फिर डी ए बार कोड. तो यार उत्तर कौन है जो ए बार कोड. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव एन एक्रोनमी ऑफ सीडी डीवीडी रोम या फिर आरडब्ल्यू रीराइटेबल. तो यार आंसर है जो डी आरडब्ल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी, ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स ए नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेड टू बी distributed, free, centralized या फिर none of these. यार उत्तर है जो none of these. Next question देखिए, to assess properties of an object, the mouse technique to use is dragging, dropping, right clicking या फिर D shift clicking. तो यार उत्तर है जो right clicking. Next question देखिए, next question, DVD is an example of a hard disk, optical disk, output device, solid state storage device. तो यार उत्तर है जो B optical device DVD. Next question, this is the process of dividing disk into tracks and sectors, tracking, formatting, classing या फिर allotting. तो यार उत्तर है जो B formatting. Next question, help menu is available at which bottom, and start, turn off या फिर restart bottom. तो help menu कौन देखा जाए, ये तो start bottom नहीं था. Next question देखिए, the technology that stores only the essential instruction on a microprocessor chip and the use of enhance and thus enhance its speed is referred to as CSIC या फिर RISC या फिर CD-ROM या फिर Wi-Fi. तो यार उत्तर कौन है जो B है जो RISC. Next question, ASCII is coding system that provide 256 different characters, 512 different characters, 1024 different characters या फिर D 128 different characters. That is the answer, 1024 different characters. Next question, when a computer is switched on, the booting process performs integrity test, power on self test, correct functioning test after reliability test. तो 61 नंबर बी है जो उत्तर, power on self test. परवर्ती क्वेश्चन, a computer system that is old and perhaps not satisfactory is referred to as an ancient system, historical system, age old system या फिर legacy system. तो यार उत्तर है जो डी legacy system. कंप्यूटर ओल्ड है बोला आपको legacy system को आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following contain permanent data and get updated during the process of transaction, operating system file, transaction file, software file या फिर master file. That is the answer, master file. D is the answer. Next question, which of the following helps to protect floppy disk from the data getting accidentally erased. तो accidentally erased data को यदि हमें protect କରିବାକୁ चाहिए ताले से आपको कौन करा जाए, SS notch, royal protect notch या फिर entry notch या फिर input notch. That is the right protect notch. That is the answer. Next question and last question of this video slide, large transaction processing system is automated. Organization use online processing, batch processing, once a day processing, end of day processing. That is the answer, batch processing. B is the answer. तो 65 क्वेश्चन जमती कहते कि ऑलरेडी डिस्कशन हो जाए तो यार टाइम एबे रिवाइज करिए. तो वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करूँ, मो चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब कर दिंतु और लाइक बटन दे. चलतु बढ़िया आगो. The which of the following helps to protect floppy disk from the data gathering accidentally erased? That is the right protect notch. Next question, which of the following contains permanent data and gets updated during the process of transaction? That is the master file. Next question, a computer system that is old and perhaps not satisfactory is referred to as an legacy system. Next question, when a computer is switched on, the booting process performs, that is the power on self test. Next question, ASCII is a coding system that provides 1024 different characters. The question, the technology that stores only the essential instruction on a microprocessor chip and thus enhance its speed is referred to as RISC. is the answer. Next question, help menu is available at which bottom, start bottom में help menu था. Next question, this is the process of dividing disk into tracks and sectors, that is the formatting. Next question, a DVD is an example of a hard disk, optical disk, output disk. So DVD is a example of optical disk.
To assess properties of an object, the mouse technique is to use is right clicking. Property हमें वहाँ पे right click करो. Next question. A device that connects to a network without the use of cable is said to be. So none of these हो जाएगा यार आंसर. Next question. A reusable optical storage will typically have a acronym of RW. Readable. Next question. Codes consisting of lines varying width or length that are computer readable are known as that is the barcode. Next question. These are used to identify a user who returns to a website, that is cookies. Next question. The ability to recover and read deleted or damaged files from a criminal computer is an example of law information enforcement specialty called that is computer forensic. Next question. The computer manipulated data in many ways and the manipulation is called processing. Next question. The difference between the people with access to computer and the internet and those without this access is known as digital divided. Next question. A computer program that converts an entire program into machine language at one time is called a or n, that is characters. Next question. Servers are computers that provide resources to other computers connect to a network. Mainframe supercomputer, that is a mainframe computer. Next question. This is the science that attempts to produce machine that display the same type of intelligence that humans do, that is artificial intelligence. Next question. The CPU and memory are located on the motherboard. Next question. Which of the following is not one of the four major data processing functions of a computer, that is analyzing querying data. Next question. COBOL is an acronym of Common Business Oriented Language. A is the answer. Next question. This is an additional set of commands that the computer displays after you make a selection from the menu, that is a dialog box. Next question. Repeated question. Okay. They store data or information temporarily and pass it on as a directed by control unit, that is the memory data. Next question. Which one of the following is not a computer language, that is MS Excel is not a computer language. The task of performing operation like arithmetic and logical operation is called processing. Next question. This is the ability of a device to jump directly to the requested data, that is random access. Next question. On real-time system become popular in this generation, third generation. Next question. What is the other name of the program chip LSIC? Next question. A device which is not connected to CPU is called offline devices. Next question. The dash is the amount of data that a storage a device can move from the storage medium to the computer per second, that is data transfer rate. C is the answer. Next question. The primary function of the dash is set up the hardware and load a start on operating system, that is BIOS. Next question. Param is an example of a supercomputer. Next question. Which is the following able in the form of PC now? PC is a microcomputer. Next question. In which of the computer data represented as a discrete signal? Discrete signal, that is digital computer. Next question. Next question. In world today, most of the computers are digital. Next question. These are the systems software to facilitate editing of text data and data, that is editors. Next question. NOS stand for network operating system. Next question. These are set of rules and procedure to control the data transmission over the internet, that is IP address. Next question. The first web browser is Mosaic web browser. Next question. VoIP stands for Voice over IP. Next question. Which of the following is a type of network, that is PAN? Next question. Which of the following is a network of topology? Bus topology. Next question. MAN stands for Metropolitan Area Network. Next question. Joseph working are example of computer viruses. Next question. These are high-end printers, that is higher printers का cause है, that is the laser printers. Next question. These are used for plotting graphs and design on paper, that is plotters. Next question. This printer is the cheapest in the terms of price and operating cost, that is dotmatic printers. Notebook, laptop, palm, handheld computers are coming under the category of desk computer, that is a portable computer. Next question. The third relative is the form of monitor. Next question. Desk computer operate essentially by counting in a digital computer. This computer is small general purpose microcomputer but larger than portable computer.
Next question. Switching device of fifth generation computer is vacuum tube, transistor, IC, VLSI. So switching device कौन है जो VLSI. Next question. Snowball is an कौन HLL. Next question. High level language. The scrambling of code is known as encryption. Next question. Hardware or software designed to guard against unauthorized access to a computer network is known as D is your firewall. Next question. This is the measurement of things such as fingerprints, retinal scan used of the security access, that is the biometric. Next question. A logic bomb that was created to erupt in Michelangelo's birthday is an example of time bomb. Next question. What type of virus uses computer host to reproduce itself? That is malicious virus. Next question. A program that performs useful tasks while simultaneously allowing destructive act as a Trojan virus. Next question. Malicious software is known as malware. Next question or last question. Collecting personal information and effectively posing another individual is known as the crime of identity theft. तो आजिकार मैराथन ले एतिक क्वेश्चन थे 65 क्वेश्चन. तो मु आशा करी समस्त को सेशन भलो लागिथिबो. थैंक यू फॉर वाचिंग. पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो.